हमेशा ग्लैमरस और काफ़ी अच्छे डांस करने वाली अभिनेत्री मानी जाती हैं, लेकिन जब फिर मिलेंगे की बात करते हैं एकदम संजीदा रोल है, काफ़ी डी ग्लैमराइज्ड रोल है, तो क्या वजह रही कि आपने इस रोल को चुना था? गॉश, अभी पिक्चर मतलब रिलीज़ भी हो चुकी है और लोग देख भी चुके हैं. वापस इस सवाल को दोहराना, आई डोंट नो. लेकिन फिर भी मैंने ये सोच के नहीं किया था कि ये कोई ये एक प्लान नहीं था मेरे मन में. ये रोल मुझे ऑफ़र किया गया और मुझे अपने इमेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है. ग्लैमरस हो, डी ग्लैमराइज्ड हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता as long as I'm happy with what I'm doing और मुझे एक रोल से satisfaction मिले. There are different reasons you do a film. Some films you get job satisfaction out of, some films you do for friends, some films you do for money, whatever. But अभी जो मेरा नज़रिया है फिल्मों के प्रति वो obviously creatively satisfy करनी चाहिए. और I think Phir Milenge is the kind of film that gave me job satisfaction. That's the reason I did it. मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये मेरे इमेज से हटकर है या लोग क्या सोचेंगे या लोग मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगे. मुझे खुशी इस बात की है कि लोगों ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट ही नहीं किया, अप्रिशिएट भी किया. तो आई एम रियली हैप्पी. एक मेल डायरेक्टर का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है और एक फीमेल डायरेक्टर का डेफिनेटली डिफरेंस तो रहेगा, क्योंकि फीमेल्स का जो रहता है वो हमेशा सेंसिटिव पॉइंट्स को ज़्यादा, इश्यूज़ को ज़्यादा उन लोग फोकस करते हैं. तो ऐसे क्या खास फाइनर एलिमेंट्स थी जो आपके अंदर एज एन एक्ट्रेस इवॉल्व हुए व्हेन यू वर वर्किंग विद रेवती? Well, Revati is not just a great director. She's also a very good actress herself. तो उस तरह से देखा जाए तो मेरे लिए एडवांटेजेस ही था. तो I just relied on her sensibilities और मैंने कभी question नहीं किया. Not the look of the character, not the way the character behaved. तो जो उन्होंने मुझे कहा मैंने बस follow किया blindly और results तो आपने देखे ही हैं. It's always I don't know how different it is to work with there's barely any difference. A director is a director. लेकिन since Phir Milenge was a woman-oriented film, maybe it did make a difference that Revati, being a woman herself, handled it a little more sensitively. So maybe that was one of the advantages. But otherwise, Revati is like a complete man. She wants to just take over और बहुत domineering है और dominating है और हर चीज़ को अपने आप करना चाहती है. Very self-reliant. विमेन रिलेटेड है तो खामोश भी कुछ उसी तरह की फिल्म है. किस तरह का रोल है आपका एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड विद दैट फिल्म? This year actually I'm looking forward to all kinds of different films coming out for me, so it's a very exciting year. Khamoshh भी बहुत ही अहम फिल्म है मेरे लिए क्योंकि it is woman centric. I play the role of an escort girl जो मैंने पहले कभी किया नहीं है. काफ़ी बोल्ड रोल है, लेकिन इस पिक्चर में ऐसा कुछ नहीं है जो अश्लील है या लोग बोलेंगे कि अरे हम लोग अपने फैमिली के साथ नहीं जाके दिख सकते. ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो उससे बाहर निकलना चाहती है. सो वी आर नॉट डेल्विंग इनटू वो कॉल गर्ल कैसे बनी और क्या उसकी मजबूरियाँ थी और वो सब वो कुछ नहीं है. शी इज़ लीविंग एवरीथिंग एंड शी इज़ गोइंग बैक एंड हाउ शी गेट्स स्टक इनटू समथिंग एल्स और उसकी ज़िंदगी कैसी बदल जाती है वहाँ से. तो इट्स अबाउट दैट. इट्स ऑल्सो अ थ्रिलर. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म. और सबसे ख़ास बात खामोश की ये है कि हम लोगों ने रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट की थी फिल्म को. 25 डेज़ में और 25 रातों में कंप्लीट की. तो आई थिंक दैट्स अ वेलकम चेंज फॉर हिंदी फिल्म्स और ऐसी फिल्में बननी चाहिए इन स्टिपुलेटेड टाइम. सलमान और आपका काफ़ी जॉली नेचर है, तो हाउ इज़ इट ऑफ स्क्रीन लाइक, बिकॉज यू गॉट सो मेनी फिल्म्स विद लाइक गर्व, फिर मिलेंगे नाउ, शादी करके, फंस गया, अनदर फिल्म कमिंग अप. सो व्हाट इज़ द केमिस्ट्री लाइक ऑफ स्क्रीन? सलमान मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो शायद उस वजह से केमिस्ट्री और भी गहरा है और दिखाई देता है स्क्रीन पे. बहुत हंसी मजाक का माहौल रहता है. तो it's lots of fun shooting with Salman and he's a very good artist and there's so much I've learned from him.
And हाँ, शादी करके फंस गया यार is the next release. And it's a very different film from the other two films that we had done. In fact, Shaadi Karke was one of those first films that we had signed together. और बस थोड़ी सी डिले हुई है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है. और I'm happy that the film is releasing now. But very diverse from the films that Salman and I have done before. In between, there were not many of your films getting released, and after Phir Milenge, critics have really appreciated your performance as an actress. So why is it that you were not getting very powerful oriented roles? You were not getting it earlier, but now with Phir Milenge, that thing has really started off. ऐसा कुछ नहीं है. मेरी जो भी अभी फिल्में आ रही हैं वो सारे बहुत मेरे सारे किरदार बहुत अहम हैं. और I think you just go through different phases in life. I did a very important role even in Dhadkan. It was a love story where two men were vying for me. So it's not like वो किरदार अहम नहीं था. It's just that I have done films that have interested me and that I have wanted to do. और मेरे खुद के reasons होते हैं एक फिल्म करने की, तो I can't explain them to you. But अब जो मैं फिल्में करना चाहती हूँ और जो कर रही हूँ, I want them to justify me as an actor. So even if it's a multi-starrer like Das, my character is great and I'm very, very happy with it. There are lots of camps which really exist within the film industry, and the top 3 Khans are one of the most prominent camps which every person would like to work with them. So do you think these kind of camps are really justified? Because there are lots of people who have the potential and still do not get a chance to work with the great banners because they already have a set of people with whom they like to work with. What do you think on that issue? No, I don't believe in this whole camp thing. I work with all those people who are interested in working with me. और मुझे लगता है I honestly feel this way after working so long in the industry कि only if an artist really suits the character, then he or she is taken. Just because you're friends with someone, you cannot just fit the person into the role. You have to suit the character. So camp, no camp. If your best friend is in your camp and if she doesn't fit the role, you're just you're not being fair to your script. That's the way I think. Lots of your rivals really wonder how has Shilpa Shetty maintained her slim figure. So what is the reason behind it? Well, I really don't know. We are in the beauty business. We have to take care of the way we look, and I do my bit of whenever I do get the time, I work out and stay happy. I think that's most important because when you're happy, it reflects on your face, and people feel happy when you're happy. That's it. Do you think post Phir Milenge is one of the best phase of your career right now, wherein you're getting lots of powerful roles in your life? Do you think so? Career-wise, it is the best phase. I won't deny that. But I've had my highs, I've had my lows, so nothing affects me now. The only thing that I'm kicked about is my work. और मैं बस अपनी खुशी अपने काम से ही derive करती हूँ. और काम हो नहीं हो, at the end of the day, what makes me really happy is the fact that that people say that Shilpa Shetty is a nice person. Whether they say I'm a good actress, bad actress, doesn't matter to me. तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. We're living in such a stressed environment wherein you have different schedules in the same day, two shifts happening. So how is it that you like to relax yourself? How does Shilpa Shetty like to relax? Watching comedy films like Abhishek was saying. No, I do catch up on films whenever I get the time. उसके अलावा जब मैं घर पे होती हूँ, जब मैं काम नहीं कर रही होती तो मैं घर पे ही होती हूँ. और maybe I catch up with some friends and I'm a home bird basically. तो मैं घर पे रहना पसंद करती हूँ. शायद मैं थोड़ा बहुत कुकिंग कर लूँगी घर पे. Because I find cooking very therapeutic. So that's that. My life is very simple. Tell us something about your forthcoming projects which you're really excited about. Well, I'm excited about every project. I'm currently doing a film with Shamita. So it's the first film in which you'll see two sisters together. That's Deepak Tijori's film, Fareb.
Then I'm working on Das right now, which is a multi-starrer with Sanjay Dutt, Abhishek. There's Zayed Khan, Esha, Dia Mirza. It's a multi-starrer, and there's Sunil Shetty. So it's good fun. It's an action film. Then there is Khamoshh, जो तैयार हो गई है. So right now there's just this many films, and I'm very happy with the kind of work I'm doing. जिस तरीके से मेरा करियर जो है शेप अप हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ. लास्ट टू क्वेश्चंस, किस तरह के रोल्स अब आप अपना रोल्स का किस तरह से चुनाव कर रही हैं, बिकॉज नाउ यू हैव मेड अ मार्क विद फिर मिलेंगे इन योर करियर, सो as an actress I'm talking about from the critics point of view, not from my point of view. I don't do films for the critics. I work for the masses and I work for myself too. So जो फिल्में मुझे पसंद आएंगी और जो लोग मुझे जस्टिफाई कर सकते हैं, मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ. और मैं ऐसी फिल्में करना चाहती हूँ जो लोगों को एंटरटेन करें या लोगों को एक सोशल मैसेज दे या मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन दे, तीनों में से. सो आई डोंट नो, मे बी द क्राइटेरिया फॉर मी चूजिंग माई फिल्म्स वुड बी वन ऑफ द थ्री. Lots of your co-actors like Raveena, Kajol and everyone have settled down in the marriage and having kids and everything. So when would we see Shilpa Shetty getting settled down? I'll send you an invitation when I get married, when I decide to get married. So nothing on अभी the तक तो कुछ नहीं. nothing on the cards right now. I mean, a beautiful girl like Shilpa Shetty and still single. Yeah. Lots of guys must be really around trying to get your attention. So But right now, though, there's nothing on the cards. I just feel that the phase I'm going through right now won't come back again in my life. So I'm giving it my best shot. So whatever God has in store for me, I'll just accept that and move on. here's wishing you all the best, Shilpa. Thanks a Thank lot. you.